Good evening, everyone. Welcome to Aspire IAS. Myself, Ankit Kumar, Director Aspire IAS, and I am the mentor of more than 450 results in the UPSC, including Nandini Kihar Rank 1. So many dedicated say students watch Aspire IAS video. After a long time of 2-3 months, again, we are coming in the assistance of all the serious students who really want to qualify preliminary examination 2023 through our series Samadhan PT Tricks 2023. So Samadhan PT Tricks 2023 is an extension of Samadhan test series. Those people who are not that much economically good, want to give the good test paper with discussion, they can just log on to our website www.aspireias.com, and then you will go to Samadhan test series and paying 100 rupees and you will solve the paper with discussion of 4 hours in an elaborated manner. So what exactly we are doing in this Samadhan PT series 2023? In this, we are trying to complete the overall theme-wise topics. For example, we are starting with January month. Then we are providing you biodiversity, 1, 2, 3. Then we are providing you animals. Then we are providing you the world summits, conferences, convictions, organizations, then all the important legislations, Supreme Court orders. In this manner, theme-wise, we are trying to provide you 30 sessions around. That means from the month of the whole April, we are trying to provide you this type of dimensions in which you people can complete your whole syllabus, even fill up the gaps and generate the confidence. Even tomorrow, we are starting with the free mapping crash course. UPSC is asking 7 exclusive questions regarding the mapping. And according to me, mapping is little bit weakest part among the students. And we invented the mapping module in 2010. And after that, Aspire mapping module is the student favorite. But so many students want my guidance. That's why from tomorrow, I am coming with free mapping crash course for 8 days. You people can also join this crash course, which is available online, offline, even in recorded mode. So if you are not comfortable to join today, you can join in the online mode, which is available for 2 months till May 28. So this is the smallest part from my side. What exactly we are doing for you. Now let's begin how we are providing you this PT Samadhan. That is a PT trick batch. Under this, the material is already uploaded free of cost to all of you on the Aspire website. So I am providing you the demonstration how this particular thing works for. So let's start what exactly, how you can, that is a take this material. So everyone please listen carefully. You people can go to Aspire IAS website. आप सब लोग Aspire IAS website की तरफ जाएंगे. When you people went to the Aspire website, just type Aspire website and come to the over navigation bar. When you come to the navigation bar, open the current affairs material. Under this, newspaper analysis notes. And when you are providing the newspaper analysis note, this is a part of free mapping module जहां से आप enroll कर सकते हैं. Here is a Samadhan PT tricks. So here we are providing all the Samadhan PT tricks. Here our Aspire newspaper notes also is there. Now here I am clicking PT tricks January shorts. I am clicking it. Now here is a PT tricks January short with a booklet where you people can read in a very nice manner about the PT tricks. So let's begin what exactly are in the part. Number 1, Veer Bal Divas. The government of India provided the Veer Bal Divas in the month of December on the memory of Guru Gobind Singh. बस इतना याद रखना है, वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के उस पर बनाए जाते हैं. And it is more than sufficient to remember about the Veer Bal Divas. Then Guru Gobind Singh is a 10th Guru of the Sikhs. तो गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु थे हमारे सिक्स के. एंड द born in Patna, Bihar 1666. Now here they provided the Khalsa 5K जो होता है आपका कृपान कटार एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड इनका जो आज मेन एरिया है दैट इज इन महाराष्ट्र, नांदेड़. आपको याद रखना है, दे आर मेनली रिवाइजिंग द नांदेड़. तो नांदेड़ इज अ मेजर एरिया रिगार्डिंग द गुरु गोविंद सिंह. फिर अनदर न्यूज जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इट इज रिगार्डिंग द नेशनल यूथ डे. तो नेशनल यूथ डे जनवरी 12 को होता है स्वामी विवेकानंदा के बर्थडे पर. तो नेशनल यूथ डे इज ऑन 12th of January, स्वामी विवेकानंदा पार्ट. ऑब्जेक्टिव क्या है? रेशियल थिंकिंग अमंग द यूथ, क्योंकि विवेकानंदा को
we considered as an icon of the youth. He was a adherent disciple of Sri Ramakrishna Paramhans. तो रामकृष्ण परमहंस के इनको हम डिसाइपल मानते हैं. And he took the name Vivekananda after Maharaj Ajit Singh of the Khetri state requested him to do so, changing the Sachinananda that he used before. तो विवेकानंदा का स्टार्टिंग में नाम था Sachinananda. Now Guru Ravidas, we all are knowing Ravidas and Ravidas Jayanti. Guru Ravidas was a great philosopher and he belonged to the Bhakti movement. He was a saint and the poet and he was a contemporary of Kabir. तो आपको याद रखना है Guru Ravidas. So Ravidas community is a major community which every political party want to appease. Now Shri Ramanujacharya. So now this is a very important. Last year 2022, Government of India and Pradhan Mantri Narendra Modi, world largest, second largest statue को उन्होंने inaugurate किया by the name of, there is a statue of equality in Hyderabad. The world's second tallest statue is a sitting position, is made up of पंचोला, meaning combination of gold, copper, silver, brass and zinc, जिसको हम पंच धातु की अंगूठी भी बोलते हैं. तो जो पंचोला और द पंच धातु is comprising of the 5 important elements, that is copper, gold, brass, silver and zinc. Then रामानुजाचार्य के बारे में पता होना चाहिए, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे. He born in the Tamil Nadu. Most respected acharya in the philosophy of Sri Vaishnavism. So they are the propounder of Vaishnavism sect. He was also referred to as Iliad, that is a Perumal, which means the radiant one. He is famous as the chief proponent of Vishwa Devita school, sub school of Vedanta. तो there's a विशिष्ट वेदिता जो स्कूल है हमारा वेदांता का, उसके ये proponent part माने जाते हैं. It is a non-dualistic school of Vedanta philosophy. It is not dualism of the qualified whole in which Brahmana only exists or Brahman is only exist, but is characterized by multiplicity. Now Subhash Chandra Bose, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया गेट पर commemorate किया गया on the 125th birth anniversary. Subhash Chandra Bose was born on 23rd of January 1897 in Cuttack और इनके नाम पर पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा. पराक्रम दिवस, इस बात को याद रखना है. 10 एक्सिस पावर, इंपीरियल पावर, ये गए थे वहां पर. कैप्टन लक्ष्मी बाई वाज द फर्स्ट वुमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन. Clear, and all this thing. Then Indian Republican Army, all this thing they established. Then Tipu Sultan. Tipu Sultan is a center of controversy always, but he was a very, that is a ruler, good ruler in the kingdom of Mysuru. तो kingdom of Mysuru में एक ruler थे, and elder son थे the Sultan Hyder Ali मैसूर के. बस हमें इतना याद रखना है. बस याद रखना है Tipu Sultan was also known for France, and the France related our फ्रेंडशिप इनिशिएट हुई थी टीपू सुल्तान के समय से. तो टीपू सुल्तान एंड द ओवरऑल यूज ऑफ मिसाइल, पहली बार टीपू सुल्तान ने फ्रेंच मिसाइल्स को वार में यूज किया था, लिबर्टी के लिए यूज किया गया था. तो ही वाज अ प्रोपाउंडर ऑफ समहाउ लिबर्टी, एंड द सेम टीपू सुल्तान साइन द पीसफुल एग्रीमेंट विद द फ्रेंच पीपल. तो इसके लिए हमें इसको याद रखना है. देन इंडियन वुमेन अनसंग हीरोज. नाउ सो मेनी वुमेन यूपीएससी नाउअडेज आस्किंग इन द हिस्ट्री पेपर. तो हिस्ट्री पेपर के लिए नाउ वन बाय वन ऑल द वुमेन एंड द देयर कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे. स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे. रानी अबाका हु थ्वार्टेड पोर्टुगीज अटैक फॉर सेवरल डिकेड. तो रानी अबाका याद रखना है, वाज द फर्स्ट तुलुवा क्वीन ऑफ उल्ला, जिन्होंने पोर्टुगीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी. नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द चौटा डायनेस्टी कर्नाटका. तो ये कर्नाटका के उसमें अंडर आएगा. देन मतंगी हजारा फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने नेशनल फ्लैग को क्या किया था, लहराया था. तो मतंगी हजारा बंगाल से बिलोंग करती थी. शी पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अंटिल शी वाज शॉट डेड बाय द ब्रिटिश इन अ तामलुक, एंड शी वाज अफेक्शनेटली नोन एज गांधी बुढ़ी. बंगाल में ओल्ड लेडी गांधी, तो ओल्ड लेडी गांधी बोलते हैं. साल सत्याग्रह में इनका पार्ट था. देन गुलाब कौर ब्रिटिश, ये आपके मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, द वुमेन एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द इंडिपेंडेंस. तो गुलाब कौर नाम से समझ में आ रहा है. नाउ शी फॉट रिगार्डिंग द ब्रिटिश रूल आफ्टर बर्निंग इट ऑन ड्रीम्स ऑफ अ लाइफ अब्रॉड एंड देन ज्वाइन द गदर पार्टी. तो गुलाब कौर ने इंडिया में गदर पार्टी को ज्वाइन किया. देन पद्मजा नायडू, हम सब जानते हैं पद्मजा नायडू, डॉटर ऑफ सरोजिनी नायडू, 5th गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. 21 ईयर की एज में शी ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड शी वाज जेल्ड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट. पद्मजा नायडू. देन जलकारी बाई सोल्जर थी, रानी झांसी, एडवाइजर टू द रानी ऑफ झांसी, एंड सीज ऑफ रानी ऑफ झांसी के समय उन्होंने काम किया था. नाउ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड सेंसस. तो आपको याद रखना है सेंसस राइट नाउ इज अंडर द
overall completion stage, delayed due to the overall COVID. Ministry of Home Affairs is a nodal agency regarding the census. तो भारत में census Ministry of, that is the Home Affairs, Registrar General of India करता है. And census पहली बार start किया गया था Lord Viceroy Lord Mayo in 1872. ये याद रखेंगे. तो Lord Mayo 1872 में यहाँ किया था. And now we are providing in the census the size, distribution, socio-economic, demographic and other characteristics of the country population. पहला synchronous census भारत में 1881 में किया गया था. And the responsibility of conducting the decennial census rests with the Office of Registrar General, Ministry of Home Affairs. Now, census is different from the National Population Register. Throughout the world, in different countries, there is a provision of National Population Register. भारत की मैक्सिमम कंट्री में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वर्ल्ड की, सॉरी भारत नहीं, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात की जाती है. बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर सिटीजन्स. भारत इज अ, इंडिया इज अ perishable country, that means a perennial country, that means our borders are porous and anyone can come to India and again go went to away from India, and we are not knowing what type of internal security and they're consuming our resources. That's why government of India want for the basic, the overall understanding of the Indian demography and the intruders from other countries, because India is also not part of Refugee Convention. Bharat Refugee Convention का भी part नहीं है. So under this regard, what exactly is the NPR? So NPR is to create a comprehensive identity database of every usual resident in the country, and it is mandatory for every usual resident of India to register in NPR. तो जो भी हमारे यहाँ का resident है वो NPR में करेगा, and through this we can identify what exactly his overall occupation, citizenship, कहाँ से आया है, कब आया है, कैसे आया है, and it is guided by Section 15 of the Census Act 1948. फिर now Tonga volcanic eruption. हम सबको पता है volcanic eruption क्या होता है. So when we are doing the volcanic eruption, we should understand some of the basic important things, which is highly important. Volcanism, we are knowing there are plate boundaries. One is convergent plate boundary. Now this is the oceanic plate and this is the continental plate. Now this plate is melting below, and these are the volcanic mountain chain. That means the most explosive volcanic explosion is always belong to the convergent plate boundary, mainly ocean and continent. Therefore, the whole boundary of USA, West Coast, Mount Rainier, Mount Shasta and Mount Whitney. Rainier, Shasta, Whitney, याद रखिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं. Then in the Mexico, Popocatépetl, Mount Popocatépetl, and then part. And then in the South America, Mount Cotopaxi, Mount Chimborazo, Ojos del Salado, Aconcagua, all are the volcanic peak. On the other side of the Pacific, here, Kuril Islands. Then Mount Fuji in Japan, Mount Fuji in Japan. Philippines, Pinatubo, Mount Pinatubo. Then in the Indonesia, Mount Krakatoa. All these are the volcanic belt. Apart from that, this belt is extended in the Mediterranean. Mount Etna, Stromboli, Mount Etna, Mount Stromboli, Mount Vesuvius. तीन नाम याद रखना, Etna, Stromboli and Vesuvius. All are volcanic. तो volcanic peak हमें कहाँ कहाँ मिल रही है? North America broadly, Central America, including Caribbean, and here is Hawaii Island, Mauna Kea, Mauna Loa. Recently, Mauna Loa, the world largest volcanic explosion से लगातार volcano निकल रहा है. It is a shield volcano. यहाँ पर blast नहीं होता है. तो shield मतलब it is a dome like, बस आराम से. Then South America, then Eurasia, Southeast Asia and Indonesia. No Australia. Australia में कोई भी volcanic peak नहीं मिलेगा. Then Australia, Antarctica में नहीं मिलेगा. Now in the Europe there is a good amount of volcanic peak, particularly in the Mediterranean. ये कौन सा zone है? Mediterranean. Vesuvius, Etna and that is the Stromboli. Then in Africa, Great African Rift Valley. So Africa Rift Valley, this is a symbol of African Rift Valley. Now here there is a volcano, but they are not that much active. Mount Kenya and Mount Kilimanjaro, both are the volcanic mountain. Muchinga, Mutumba are also that is a mountain. तो हमारा mapping module कल से start है. So these are the some demonstration for you regarding the mountain. इसी को बोलते हैं Pacific Ring of Fire. तो Pacific Ring of Fire is comprising of west coast of North America, South America, and the east coast of Asia, Southeast Asia, Indonesia, but no Australia, no Antarctica. The extension of Pacific Ring of Fire is in the Mediterranean Sea till Himalayas.
Himalayas is a continent plate. That's why there is no volcanism, earthquake. So Himalayas are only providing the earthquake, but no volcanic explosion. So let's see what exactly there's a handout for you people are talking about. So Tonga volcanic eruption, these all are the volcanic eruption जो आप देख पा रहे हैं along the cursor. Now we are providing the news along the Pacific Ring of Fire. Recently volcanic erupted in the southern Pacific island of Tonga, which triggered tsunami waves around the Pacific. The Tonga island occurs along Ring of Fire, a parameter of heightened volcanic and seismic activity that encircle the Pacific Ocean basin. The Ring of Fire is the Pacific region home to over 450 volcanoes, including 3 world most active volcanoes: Saint Helena's in USA, याद कर लो पीटी के लिए, Saint Helena's, Mount Fuji in Japan, Mount Pinatubo in Philippines जो recently blast हुआ था, तो ये नाम जरूर याद रखना है, Mount Pinatubo, which are providing good amount of aerosols in the atmosphere. उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो शेयर करो और बच्चों को ताकि उनको फायदा मिले. The Ring of Fire is a result for subduction of oceanic tectonic plate beneath lighter continental plate, जो मैंने आपको बोर्ड पर सिखा दिया. Now ला नीना इफेक्ट, क्या दिल्ली में अप्रैल में भी बारिश हो रही है? फरवरी में देयर वाज अ समर, during the Holi we are feeling summer आ गया, then suddenly temperature drops down, and now for the last 15 days continuously rain, the overall destruction of wheat crops, which is a rabi crop, and now the temperature dipped to 18 degrees, 17 degrees, 16 degrees. Reason are two, we are in a La Nina, more frequency of western disturbances, and because of the heat, the ice on the Himalayas are melting, resulting into high pressure, and wind are moving from high pressure to low pressure. That's why cool wind are still coming over Delhi. तो लानीना इफेक्ट में क्या होगा, आप याद रखना, लानीना इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ मानसून. तो लानीना का मतलब होगा देयर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ लो प्रेशर ऑन द इंडियन ओशन एंड वेरी गुड अमाउंट ऑफ हाई प्रेशर विद इन द पैसिफिक ओशन, विच आर फर्दर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथनिंग अप ऑफ मानसून. दैट इज नोन एज लानीना. तो लानीना आपको समझना है दैट साउथ अमेरिका एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पैसिफिक में जबरदस्त हाई प्रेशर होगा, एंड यूएसए इंटीरियर में समर होगा, बहुत गर्म होगा, एंड देन इंडियन ओशन इज हैविंग द overall low pressure, which further resulting into good amount of monsoon. Then bomb cyclone. The east coast is bracing itself for a bomb cyclone, also known as Nor'easter. So there is a local wind in the USA by the name of Nor'easter that is on course to the barrel in the mid-Atlantic Ocean. इसको हम बोलते हैं bomb cyclone. It is a mid-latitude cyclone that intensify rapidly. तो एकदम से ये रेटिफाई हो जाता है. It also the low pressure at the center. Cyclone, tornadoes. California is affected by both cyclone and the tornadoes, and Florida is also affected by both cyclone and tornadoes. Hurricanes are known by the hurricane is a there is the overall tropical cyclone, low pressure के zone है सारे. Then 50 ASI protected monument disappear. The Minister of Culture recently told Parliamentary Standing Committee that 50 of the India's 3693 centrally protected monuments were missing. A protected monument means an ancient monument which is declared to be a national importance by or under Ancient Monument Archaeological Site and Remains Act. AMASAR Act regulate the prevention of monument archaeological site of national importance. तो बहुत सारे monuments हैं जो disappear हो रहे हैं. Then Gandhiji's 75th death anniversary. Now these are the vows of the Gandhiji जो गांधी बोलते थे that you should bring, it is important for ethics. पीटी में कभी भी आ सकता है, बोलो अहिंसा, बोलते जाओ मेरे साथ साथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, असत, एसेटिया दैट मींस नॉन स्टीलिंग, चुराना नहीं है, ब्रह्मचर्या, सेल्फ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग चैसिटी, अपिग्राहा, नो पोजेशंस, आपको ज्यादा कलेक्शन नहीं करना है, मोबाइल, आईफोन वगैरह ये सब. देन there's a शरीर आश्रम, वर्किंग फॉर डेली फूड, हर रोज काम करो ताकि अपना खाना खुद संभाल सको, शरीर आश्रम. देन अश्वादा, कंट्रोल ऑफ डाइट, अपनी डाइट पर कंट्रोल करो. देन सवत्र, there's a भया वर्जनः, there's a fearlessness, आपको बिल्कुल डरना नहीं है. सर्वधर्म संतवः, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन. स्वदेशी, लोकल गुड्स को पहनना है. एंड स्पर्श भावना, अगेंस्ट आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी, आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं करेंगे. So these are some of the important vows or application part of the Gandhi ji which is very important for your examination. Gandhi ji जब भारत आए थे during 90s, that is 1914 के आसपास, then प्रवेश भारतीय दिवस उसी दिन हम बनाते हैं around the January. सत्याग्रह किया था उन्होंने, and then various type of formulas they are showing. चंपारण सत्याग्रह is one of the example. अहमदाबाद में strike is another important example, and खेड़ा सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट में किए थे. Then रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह और ब्रेकिंग द लॉ ऑफ सॉल्ट,
देन मैकडोनल्ड अवार्ड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद गांधी जी आजादी के बाद चले गए. So these all are the part. Now another important news, Undesh World Social Report 2023. So this is a part of United Nations Department of Economic and Social Affairs published the World Social Report 2023. याद रखना पीडी के लिए important है. तो United Nations Department of Economic and Social Affairs published the World Social Report 2023 with the theme leaving no one behind in an aging world. तो world age कर रहे हैं and we want that no one will be behind. It is a part of UNDESH, United Nations Department of Economic and Social Affairs World Social Report. Since 2021, the periodicity of the report has been changed from a 4-year cycle to a 2-year cycle. तो पहले 4 साल में आता था, 2 साल में आता है. 2022 world marked the 20th anniversary of the adoption of the Madrid International Plan of Action on that the aging. तो ये aging के लिए आप यूज कर सकते हैं. इसके सब रिपोर्ट यहाँ पर दे रखी है. तो this purple is a part more than double. The old people has been doubled, 1.6 billion by 2050 हो जाएगा. Right now it is 761 million. Indian population is also moving towards aging. फिर रिपब्लिक डे परेड पर किसने क्या क्या दिखाया? दिस इज द ओवरऑल पार्ट. हरियाणा भगवत गीता, कर्नाटका स्टेट्स वुमेन अचीवर्स, शिरुमुला तिमाका, सलोगटी नरसिम्हा एंड तुलसी गौडा हलाकी, ये पीटी में एग्जाम में आ जाएगा. उत्तर प्रदेश दीपोत्सव इन अयोध्या, जम्मू कश्मीर अमरनाथ श्राइन, झारखंड दैट इज द बैद्यनाथ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिव, त्रिपुरा महाभूमि बोधि मंदिर बुद्धा टेम्पल, गुजरात क्लीन ग्रीन एंड एफिशिएंट गुजरात, लद्दाख टूरिज्म एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ यूटी, असम अहोम वारियर लचित बोर दैट्स अ बोर फुकान 400 ईयर एनिवर्सरी बनाई जा रही है इनका. तो आपको ये जरूर याद रखना है. लाचित बोर गुपान. आंध्र प्रदेश दैट्स अ प्रबल तीर्था फेस्टिवल ऑफ प्रेजेंटरी ड्यूरिंग महाशिवरात्रि और संक्रांति. देन केरला कारेथिनी अम्मा विनर ऑफ द नारी शक्ति पुरस्कार 2020 पीटी एग्जामिनेशन, दैट इज अ कार्थिया यानी दैट इज अ अम्मा. अरुणाचल प्रदेश पोटेंशियल फॉर टूरिज्म, Uttarakhand Corbett National Park and Almora Jogeshwar Dham. Then West Bengal, that is the Durga Puja, and Tamil Nadu Women Empowerment and Culture of the State. All these things are the part of that is the Republic Day Parade, which is providing the right now all the that is the overall जो आपके वो चलते हैं that is the झांकियां है ना. Then monocropping impact on biodiversity. India is a country which is right now affected by the monocropping और monoculture. एक जैसा crop which is resulting into loss of biodiversity. UPSC क्या पूछेगा? पीटी ट्रिक में यही है. एप्लीकेशन पूछेगा व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मोनोकल्चर ऑन द एनवायरनमेंट. पहला डिसएडवांटेज बायोडाइवर्सिटी खत्म, ओनली फ्यू सीड्स फ्यू क्रॉप्स एंड लेस पॉलिनेशन. दूसरा पॉलिनेटिंग एजेंट खत्म. तीसरा मोर यूज ऑफ वाटर सॉइल, डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट्स, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन, क्लियर, इवन लेस दैट द न्यूट्रिएंट एंड मोर कार्बोहाइड्रेट, हिडन हंगर एंड माल नरिशमेंट. ऑल दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोकल्चर. आपको 100% यहां से क्वेश्चन मिल सकता है. Turning the forest into natural rubber plantation in Tripura is negatively impacting non-human primate species and vegetation in the region. These primates help in pollination, seed dispersion and seed germination, and all these are the important problems. Then other impact of monoculture, growing same species year for year, pressure decreasing, there's a disease pressure reducing, particular nutrient soil, monocropping deforestation को result करता है. And ना desertification, deforestation, less nutrient, more water, all these things. फिर आपको डायग्राम दे रखा है रिगार्डिंग द रबर, बिकॉज द दैट इज द रबर इज द मेन सोर्स. तो रबर ट्रॉपिकल क्रॉप है, नेचुरली ग्रोन इन द अमेज़न फॉरेस्ट. इन इंडिया केरला एंड कर्नाटका आर द गुड प्रोड्यूसर ऑफ रबर. इन त्रिपुरा आल्सो देयर आर सम पार्ट ऑफ रबर. तो आप इस चीज को याद रखेंगे. दिस डायग्राम इज फॉर दिस. देन ओएनजीसी टू मैप इंडिया जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स. तो भारत में जियोथर्मल एनर्जी क्या है? बोलो. बिलो द अर्थ heat content is coming, we are boiling the water and providing the steam on the turbine, ghurr electricity, that is known as geothermal energy. Manikaran near to Mandi, Kullu Manali is India one of the largest producer of geothermal energy. Himachal Pradesh. Then apart from that in Leh Ladakh Puga Valley, yaad rakhna, Leh Ladakh Puga Valley, and then in the Jharkhand and Odisha Tata Pani and Tapta Pani are the 4 major location of geothermal energy. World में सबसे ज्यादा geothermal energy production is in Iceland and potential wise largest is in Indonesia. So now ONGC to map India geothermal resource, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर. The focus of geothermal energy is crucial to meet the climate target of 500 gigawatt of installed renewable energy capacity and net zero carbon emission by 2070. ONGC diversification effort is a part of its energy strategy 2040. Geothermal energy is an energy source that is stored in the form of heat beneath the earth's surface.
24/7 देगा। एंड नाउ जियोथर्मल एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओएनजीसी इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलप इन द फूगा वैली लद्दाख। तो ओएनजीसी फूगा वैली में डेवलप कर रहा है। एंड टाटा पावर इज सेटिंग अप जियोथर्मल प्लांट इन गुजरात। तो गुजरात में भी कुछ साइट्स हैं। देन कोल इंडिया लिमिटेड एम सैंड प्रोजेक्ट। तो एम सैंड मतलब मैकेनिकल सैंड। तो वी कैन नॉट एक्सप्लोर द सैंड फ्रॉम राइट नाउ द रिवर बॉडी बिकॉज सैंड इज वेरी क्रूशियल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। बचपन में हम करते थे, ग्लास में सैंड के पार्टिकल डालो, उसका बाद पानी डालो तो पानी फिल्टर होके आता है। सेकंड वाटर लेवल। थर्ड बायोडाइवर्सिटी। तो सैंड माइनिंग नहीं करना है, रिवर मर जाएगी। वी कैन मेक द रिवर डाई इफ सैंड माइनिंग। तो नाउ पेबल्स को मशीन में क्रश करके सैंड बनाएंगे, दैट इज नोन एज एम सैंड। So Coal India Limited emphasized the processing of fragmented rocks, overburden rocks from sand production in the mines known as M sand. तो ये और सारे बेनिफिट दे रखे हैं regarding the M sand, highly important for your examination again. Then sand is classified as a minor mineral. यूपीएससी ने कई बार पूछा है। Under the Mines and Minerals Act, administrative control over mine mineral waste in the state government. Then black carbon aerosol. We all are knowing सूत। आपके व्हीकल में से in your vehicle unburned carbon को क्या बोलते हैं? सूत। जब ये सूत आइस के ऊपर बैठता है, इट इज नोन एज ग्रे और ग्रेइंग अप ऑफ ग्लेशियर ऑफ द आइस which decrease the albedo and now sun energy penetrate the glacier, starts melting. It is also known as thawing of permafrost region. So in the present time, thawing is a major problem regarding the climate change. Thawing of the permafrost further release good amount of carbon dioxide and methane, which is again making the climate change more harmful activity. So black carbon aerosol has affected the mass gain of the Tibet Plateau Glacier by changing long range water vapor transport from the South Asia monsoon region. Black carbon is a short-lived climate pollutant with a lifetime of only days to week. After release into the atmosphere, black carbon is formed by the incomplete combustion of fossil fuels, wood and other fuels. Melting होगी ग्लेशियर का, एशियन ब्राउन क्लाउड बन जाएगा, which is made up of dust, carbon emission and other things. Increased glacial lake हो जाएंगे, albedo index बदल जाएगा, livelihood impact and respiratory and cardiovascular disease. Then deep water circulation is another part. हिंदू में लगातार चल रहा है, इस बार आ जाएगा because of warming up of ocean. आर्टिक एंटार्क्टिक से वाटर बहुत स्पीड से नीचे जा रहा है एंड देन रिजल्टिंग इनटू डीप वाटर सर्कुलेशन which further resulting into the changing hydrological cycle. So global overturning circulation is the equatorward transport of cold deep water and the poleward transfer of warm water which further resulting into thawing up of permafrost region. ये सारा हमने दे रखा है जो आप पढ़ सकते हैं. Now mandatory minimum sentence. 2016 ruling of Mohammad Hashim versus State of UP. The concept of mandatory minimum sentence refer to a sentence which must be imposed without leaving any discretion to the court. It means a quantum of punishment that cannot be reduced below the fixed period. POSCO के अंदर we are coming with the mandatory minimum sentence. Then live will and passive euthanasia. Recently government modified the overall euthanasia. Supreme Court, not government. Now उन्होंने बोला कि not only one person, any person can act if the person is not in a condition to will for euthanasia. भारत में अरुणा शामबांग case is a landmark judgment. अरुणा शामबांग regarding the euthanasia, that means अपने आप को खुद को मारना. तो right to life is including even life of dignified life, and if your life is not dignified, you are unhealthy, you are having every right to kill yourself with the consent. If you are not in a condition of the consent, then you should write your living will with the help of some of your near relative or somebody who will take the decision on your part, and then they will remove your life supporting system and slowly you will die. Active may within the second they will give you some injection of poison, you will die. So India do not have the active euthanasia, we are having the passive euthanasia. तो यहाँ केस दे रखा है अरुणा शामबांग एंड पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी एंड कॉमन कॉज केस. देन गवर्नर सीएम रिफ्ट इन तमिलनाडु. तमिलनाडु केरला दोनों में आपका गवर्नर और गवर्नमेंट का रिफ्ट चल रहा है. इन द केरला आरिफ मोहम्मद खान साहब रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी बिल, and in the Tamil Nadu regarding the overall that is a NEET medical education as well as Dravidian model of governance. तो यहाँ पर गवर्नर एड्रेस लार्जर इशू है. आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, and there are two articles, article 365 and 356, which are automatically associated with, that is the president rule at the time of constitutional machinery failure and at the time of when the state government is not accepting the words of the सेंट्रल गवर्नमेंट. देन फाइनेंस कमीशन का दिखाया. फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन केसी नियोगी और सेकंड का आपका थे के संथानम और करंट के एनके सिंह. एनके सिंह आपका जो फाइनेंस कमीशन है 15 5 ईयर पीरियड के लिए है 2025 तक,
and they are having the civil code and the quasi-judicial body status. And they are now providing 41%. Last वाले का था 42%. 41 इसलिए because Jammu Kashmir, Leh Ladakh become the part of the overall union territory. 15 फाइनेंस कमीशन में क्या क्या आया जो आपको याद रखना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, देन एरिया, देन इनकम डिस्टेंस, किसकी बात करते थे, दैट इज इनकम डिस्टेंस, देन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी. लास्ट वाले में था फॉरेस्ट कवर, इसमें आ गया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी. देन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन एमएलए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो उन्होंने बोला कि ऑल द एमएलए आर आल्सो हैविंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2. So this is all about the overall, that is the first, that is the January PT tricks, very minimum news. In one lecture, we are taking around 20, 25, 30 minutes. And after that, you can download this particular, there is a lecture and then revise. Every day we will come in the evening time. And in the evening time around 7 to 8 p.m. you will watch this particular video regarding the Samadhan PT trick. And this is my request, join this free mapping module and do the test series 25 test paper with holistic, that is a discussion. So hope you people love this particular type of video. If you liked it, then please enjoy the learning and qualify the preliminary examination and share with very serious and very hardworking student. Thank you so much. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Thank you.